Good morning, students. Again, some more word problems of maxima and minima. So I want to make you that word problems are actually simpler. Okay, just you need to understand the question well, read it properly, and then try to understand what the actual question is saying, what it is asking. So from your miscellaneous, I have taken two questions. Show that the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r/√3. मतलब हमको क्या शो करना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब सिलेंडर के वॉल्यूम को शो करना है कि इट इज़ मैक्सिमम, यानी हमारा फंक्शन क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. माई फंक्शन विल बी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर. मतलब रेडियस आर गिवन है, एक स्फीयर है जो फिक्स्ड रेडियस आर का है, तो मीन्स आर इज़ अ कांस्टेंट, इसको हम यूज़ करेंगे. ओके, and what you need to show that height of the cylinder is equal to 2r/√3. This I need to prove. Okay, also find the maximum volume of the cylinder. So let the cylinder's radius is small r. Okay, and height of the cylinder is yours h. Okay, so I have taken, let height of the cylinder is equal to h, and radius of the cylinder is equal to, I have taken r. Okay, now what I see, for the maximum value for the maximum volume of the cylinder, the diameter and the axis of the cylinder should be same. Okay, one thing, it is a maximum volume, so volume of the cylinder formula, volume of the cylinder, our function, it is what yours, it is equal to pi r square h. So v is equal to pi r square h. Now there are again two variable, so how I am going to change it? So I will see that this is my 90 degree, so it is becoming Pythagoras theorem I can apply. So what if I take this is x, if I take this distance is x, what I get, r is mine fixed. So what is hypotenuse square, r square is equal to x square plus r square. Okay, that is, now if I change it, if I change r square, then what is x now? See, you will be seeing, if I am saying this triangle and this triangle, you will get both are congruent. How? Suppose I am taking the points a, b, suppose o it is there and it is your c and d. So you will say that triangle OAB is congruent to triangle OCD. Why it is? So you can say this one 90 degree, hypotenuse is radius of the sphere, correct, and what is that, this fixed, that is your radius of the, both the side radius of the cylinder would be same only. Okay, so which one? By RHS property. So what actually by CPCT, what it comes, your OC is equal to OA. OC is equal to, means x is equal to x, correct, this one means your h, height of the cylinder will be 2x. Height of the cylinder will be OC plus OA. Height will be what your, you can write height is equal to OC plus OA, which is equal to x plus x, it is your 2x. So I am going to use this relation in this one. Okay, so my volume will be what, your pi r square will be what, r square minus x square. So it will be r square minus x square into h is nothing else but 2x. I hope why I have done, because I need to change into one variable, and r is constant, r is fixed, given means radius of the sphere is given, means it is fixed. Now I can differentiate with respect to x, so dv by dx I will be doing this one. So just to make it simple, constant को बाहर कर दो, 2 पाई constant बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई, ये r स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, करेक्ट. I need to, whether maximum and minimum, I need to make it 0. So dv by dx is equal to 0. So it will be constant. So r square minus 3x square is equal to 0. So r square is equal to 3x square, correct or not? But you want the relation in height, so you know x is what? X is h by 2. By this already x is equal to h by 2. So you put here r square equal 3. What it will be? H square by 4. Got? So h square actually it is coming what? 4r square by 3.
So this implies h equal to 2r by root 3. This is the one step is to proved, hence proved. I need to prove this only if what that your cylinder is inscribed in a sphere. For the maximum volume, height of the cylinder will be 2r by root 3. That I proved. But volume is maximum, so I need to double differentiate it. Volume is maximum for that and find the maximum volume also we need to find out. First I will check d2v by dx2. To make it this one, d2v by dx2, I need to find out. Okay, so first I have already written here dv by dx. It is given dv by dx what was 2 pi r square minus 3x square. It was okay. So double differentiated dx2, do it. 2 pi, it will be the 0 minus 6x, correct? So it is what your minus 12, excuse me, minus 12 pi x. x का तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इट इज़ लेस देन 0. It is always less than 0. So yes, volume is maximum volume. Volume at when height of the cylinder is equal to 2r by root 3. Okay, and find the maximum volume. So you what is the formula for that one? Pi r square h. Okay, so it will be your pi r already there is your r square into h. H is what your 2r by root 3. So it will be what your 2 by root 3 r square r. We need to find out the volume of that maximum volume. So pi r square h. Okay, pi r square h value is 2r by root 3. Okay, still I need to find out the value of r square. So relation already I told you using Pythagoras theorem, r square equal x square plus r square. So x square का value हमको मिल गया था. We have calculated by the point x square was r square equal 3x square. So x square r square by 3. You have put here value of this one, transpose it, and it will be coming 2r square by 3. Okay, so you are going to put volume value 2 by root 3. R square value is coming 2r square by 3 into r. So it will be what your 4 by 3 root 3 r cube is your answer. Okay, again one more time you see just here. Okay, so what that, just to make it this one for maximum volume of cylinder inscribed in a sphere, okay, whose radius is given. तो इट इज़ वॉट दैट दिस बोथ द ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट. तो हाइट क्या हो जाएगी, आप इसको x मान लो, हाइट विल बी 2x. ओके, इस रिलेशन को यूज़ करके आपने एक वेरिएबल में चेंज किया पहले वॉल्यूम को, फिर आपने इसका डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू दैट. यू गॉट द रिलेशन दिस वन r square minus 3x square. दैट कंडीशन आई यूज्ड इन दैट वन टू फाइंड आउट द वॉल्यूम. ओके, फाइंड आउट दैट यू गॉट द हाइट विल बी वॉट योर 2r by root 3. Okay, this is one part is proved. Now it is maximum or minimum. You need to double derivative, you need to find out. You have find out the double derivative, then maximum volume when height is equal to what, 2r by root 3. Now volume will be what, pi r square h. तो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल R, फिक्स्ड R. ओके, तो फर्स्ट हाइट तो वी हैव कैलकुलेटेड. r स्क्वायर हमने किस रिलेशन से निकाला, वही पाइथागोरस थ्योरम से निकाला. Okay, and x square already we calculated, just I told you, no, that putting it is coming your equal to, when you are putting it equal to 0, you are getting it, x square will be r square by 3. Get it, the value of r square, put it, and you will be getting. One more question is there, that is also a good question. The height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h. Show that the height of the cylinder ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, मतलब किसका ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, सिलेंडर का हमको फाइंड आउट करना है. तो फंक्शन किसका आएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. हाइट ऑफ द सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन में इंस्क्राइब्ड है. ओके सर, ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, यानी कोन का सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा गिवन है, और हाइट ऑफ द कोन इज ऑल्सो गिवन, दैट इज योर स्मॉल h. ओके, इट इज गिवन is 1/3 that of the cone. मतलब height of the cylinder हमको प्रूव करना है. let height of the cylinder is h is equal to h by 3. ये तो हमको to prove. okay, what I assume that height of the cylinder is equal to what, your capital H, and let radius of the cylinder also, radius of the cylinder we need to assume let it be capital R, because already they have given in the question of this one capital H is the height of the cone. So you will say that radius of the cone, let it be small r. Okay, and capital R is that radius of the cylinder.
and capital H is that height of the cylinder, correct or not? Now first part is to prove that for what maximum volume of the cylinder, हमको प्रूव करना है कि height of the cylinder क्या है, h/3. तो maximum volume means volume का function क्या आ जाएगा, pi r square h. This is the main formula for the volume of the cylinder. You need to learn all the formulas, students, properly. This already I have said. Okay, now how I am going to convert it, that you need to say this one. So first let this triangle A B C, and I am saying this is, let it be E F. Okay, तो अगर मैं triangle A E F ले लूँ, A E F, तो मेरा tan alpha क्या आएगा, tan alpha will be perpendicular by base, तो that is your R. And what is this one, total height minus height of the cylinder, मतलब h minus h, ये आ जाएगा. And if I am taking which one, ABC, triangle ABC, ABC ले लें पूरा triangle, तो tan alpha क्या आएगा, because semi vertical angle is given fixed, that is your fixed. Okay, so what it is yours, to height of the radius of the cone is R and height of this one h. Both are tan alpha, so you are going to get, by similarity also you can get that one, but because they have used tan alpha relation in the, we need to prove it, so I am taking tan alpha. So by this first and second you will be saying what, that R by h minus h equal to R by h. ये हमारा एक relation आ गया, ठीक है इससे. Okay, now I need to make it of one variable, तो I will be taking pi and r square यहाँ से ले लेते हैं, क्या आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, R h minus h by h होल स्क्वायर इंटू h. ठीक है, तो ये किसका फंक्शन बन गया आपका, ये फंक्शन बन गया h में, करेक्ट, मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर. बाकी तो आपका कांस्टेंट है, तो इसको निकाल दो आप बाहर. पाई आर स्क्वायर इज द कांस्टेंट, रेडियस ऑफ द कोन, और h स्क्वायर भी कांस्टेंट है, और ये आ गया आपका h माइनस h का होल स्क्वायर इंटू h. ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करो किस वेरिएबल में, dv by dh इज इक्वल टू, you have to differentiate with respect to, so a constant will be out, pi r square by h square. और इसको हम क्या करें, uv रूल से कर दें. uv रूल से तो ये तो h1 हो जाएगा, it will be coming h minus h whole square plus h, और इसको कर दो आप twice of h minus h into what, -1 into -1 with respect to h I have done. तो it will be pi r square by h square. ओके, और इधर से भी कॉमन आ रहा है आपका, कॉमन क्या आ रहा है, h minus h, तो इनसाइड इट विल बी वॉट, योर h माइनस h. ओके, और ये माइनस आ गया, -2h, ये आ गया आपका. ठीक है, नाउ आई नीड टू पुट इट इक्वल टू 0. अब ये चीज़ तो 0 हो नहीं सकती, h इक्वल h तो होगा नहीं आपका, तो दैट विल बी इक्वल, सो h माइनस 3h इज इक्वल टू 0. सो वॉट यू गॉट नाउ, लिसन, h इक्वल टू 3h, तो आ गया आपका h इक्वल टू वॉट, योर h बाई 3, मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन. बड़ी ईजिली आ जाता है बेटा. वॉट इज़ द मेन थिंग, अगेन आई एम सेइंग, इसका गिवन जो है, जैसे आपको देखा था सेमी वर्टिकल एंगल एंड दैट हाइट ऑफ द कोन इज गिवन, तो ये तो हमारा फिक्स्ड है. ओके, और हमको किसको मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को, तो ये तो हमारा फंक्शन बन गया. अब इस फंक्शन में दो वेरिएबल हैं, तो आई नीड टू यूज ऑफ द फिक्स्ड थिंग्स, आई हैव टू कन्वर्ट इनटू वन वेरिएबल. उसको मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे आपने लिया इसको, यूज़ ऑफ दिस वन. फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड. टू मेक इट मैक्सिमम आई नीड टू डबल डिफ्रेंशिएट इट. ओके, सो योर dv by dx इज ऑलरेडी गिवन, dv by dh, इट इज़ dv by dh आपका गिवन है. क्या आया था आपका, पाई आर स्क्वायर बाय h स्क्वायर. ओके, एंड इट इज़ योर h माइनस h इंटू h माइनस 3h, ये आ गया था आपका. ओके, dv by dh, इसको मैं अब क्या करूँगी, d2v by dh स्क्वायर. ओके, dh स्क्वायर, तो कांस्टेंट को तो बाहर ले लो, पाई आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर. ओके, सो यू आर गोइंग टू मेक इट -1, तो ये आ जाएगा माइनस h माइनस 3h. ओके, प्लस आपका क्या आ जाएगा, प्लस इसको h माइनस h को आप लिखो सेम, एंड यू आर गोइंग टू डू इट, इट इज़ योर -3. ओके, दैट इज, सो नाउ इट इज़ पाई आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, एंड इट इज़ कमिंग नेगेटिव बोथ साइड कॉमन, तो नेगेटिव को तो बाहर ले लो. ओके, नेगेटिव साइन, इनसाइड विल बी h माइनस 3h प्लस h माइनस h. ओके, तो इट विल बी योर माइनस पाई आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, एंड इनसाइड इट विल बी योर 2h माइनस 4h. ओके, सो यू नो दैट h इज द हाइट ऑफ द कोन, वो हमेशा बड़ी होगी इससे, तो ये नेगेटिव आ रहा है, वैल्यू इज कमिंग नेगेटिव, सो इट इज़ ऑलवेज लेस देन 0. सो वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम. ओके, फॉर वॉट, फॉर
when cylinder's height is equal to 1/3 of cone's height. This is the one part is proved. Now still one more thing is proved. What is asked? The greatest volume of the cylinder. The greatest volume of cylinder क्या है? Pi. It is actually capital R square. Pi capital R square H. Okay. So now I need to put the values. Greatest volume क्यों prove करना है? You need to prove that greatest volume is 4/27 pi H cube tan square alpha. Okay, that we need to prove it. Okay, so I need to convert this one now. So what relation I am going to use? I need to find out R. और R क्या दिया था हमको? Relation था हमारा tan alpha is equal to R by this already I have written there H minus H. तो अब tan alpha is equal to R H minus H क्या हो गया? H by 3. तो you are going to solve it. R by what it will be coming? 2H by 3. Correct or not? 2H by 3. So it will be your 3R by 2H. Now put the value simply. Put the value of R square. R square क्या आएगा? R आ जाएगा आपका 2H by 3 into tan alpha. Simply. So yeah, you are going to put it. R square की जगह लिखो 2H by 3 tan alpha. 2H by 3 tan alpha. और H ऑलरेडी हमने प्रूव कर ही दिया है. क्या है आपका? 1/3 ऑफ दैट H by 3. तो इसका स्क्वायर है यहाँ पर. तो इट इज़ योर 2 2 4. ओके, एंड 3 3 9, 9 3 27. तो आ गया 4/27 बाहर. ओके, पाई एंड H क्यूब tan स्क्वायर अल्फा into H cube. तो ये proof. Hence prove that it is maximum volume is what? Your pi H cube tan square alpha. Hence proved. Okay. Just questions are not that much hard. I am telling you. That's why again one more problems I am sending based on this maxima and minima. Just read the question carefully. Go through the steps I am telling you. Follow it and do it twice. Okay. Thank you, students.